the major thing when you check in stage one is like kind of confidence they have. Whether should I keep this candidate for next 5 days, 5 दिन रख के कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ उसको, या ऐसा तो है कि इस फीड में बच्चा बोल पाएगा. So it's such a basic parameters are there, not very difficult parameter or something which require lots of intense analyzing and or no. आप एक सही ठीक ठाक से स्टोरी बना पा रहे हो, आप अपना स्टोरी को सही से नरेट कर पा रहे हो, ग्रुप में आप थोड़ा सा बोल पा रहे हो, that is all it is But sir, required. GTO is being always seen putting the goggles and observing, standing far away. Sir, वो किस तरह से चीज़ों को notice करते हैं sir? And what are the areas he really look forward when they are assessing the candidates? तो क्या होता है कि जब when we will compare both also, first personal interview है कि one to one interaction. So interviewing officer is also looking at all the time towards you. But because of this behavior, you also get sometime slightly controlled manner, और आप जिस हिसाब से भी आप बिहेव करते हो तो बहुत ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच्योर्ड बिहेवियर आता है, क्योंकि आपको पता है आप कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्व बाय द असेसर हु इज ओनली लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू. When we comes to GTO, आप कितना भी करो, like GTO put the goggles of course. I mean, one is we keep saying style and all, but it's all of us. You can assess and see every candidate's behavior pattern. लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इनफॉर्मेलिटी जरूर है, क्योंकि GTO इज नॉट डायरेक्टली टॉकिंग टू यू, इट इज सिटिंग ऑन वन कॉर्नर और आप आपस में बात. हम एज ए कैंडिडेट परस्पेक्टिव एक बहुत वो रहता है, लाइक बच्चे वहाँ बोलते भी हैं, मुझे तो अपना SSB याद आता है, भाई तेरा पक्का हो जाएगा, तेरा मतलब बॉर्डर लाइन टाइप लग रहा है, यू कुड हैव डन दिस एंड ऑल, एंड समटाइम्स दोस हु आर गिविंग फीडबैक कुड नॉट मेक इट अप. कैंडिडेट अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को सारे लोगों ने बुला लिया तो मे बी, बट एट टाइम्स यू फाइंड सारे लोगों ने बुला लिया, उसका नहीं हुआ, और जिसको शायद एक या दो बंदों ने बुलाया वो रिकमेंड हो गया. सी इट्स अ क्वालिटी एंड नॉट जस्ट क्वांटिटी. Hello friends, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing good. My name is CDR Yadav, and in today's episode we have a very special guest. Today we have Commander Vikas sir, who is a proud veteran of Indian Navy with an extensive experience in leadership roles on the various naval platforms. Not only this, he got commissioned as senior GTO at SSB Kolkata, where he was instrumental in designing and executing the GTO ground. He has an extensive assessment experience at SSB Center in Kolkata, Bhopal, Visakhapatnam and Bangalore, assist thousands of candidates and successfully selected hundreds of officers for the Indian Army and the Navy. Post-naval career, he has been co-founder at LWS Dwarka, helping candidates in achieving their dream. Recently, I got book from Oswaal books, and which is being written by Commander Vikas sir. So definitely we have talked about this book in this video. Along with that, a lot of other factors regarding GTO, what kind of things aspirant go through, and the analysis which has been taken by the assessors. So we have talked about a lot of factors. I hope you'll get to learn something new from this video. So without any further delay, let's go back to the video. Jain sir, I welcome you to the platform, and trust me, this is one of the most awaited videos because पहले भी आपके LWS के साथ collaborations हुए हैं, but आपसे directly बात करने का मौका नहीं मिला है. So yes. I'm very much excited to have you on the platform, sir. Thank you, Sheeta. In fact, it's an honor because any platform which is directly connected or linked to the candidate. Right now, I think lots of candidates go watch the kind of content you create. So it is always an honor to be in such a platform which directly or indirectly helping them with defense aspirants. My pleasure, sir. And sir, इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे पैरामीटर्स को करेंगे, चाहे वो स्क्रीनिंग हो, चाहे वो GTO हो. And I know the candidate point of view because बहुत सारे aspirant के point of view हम जब वीडियो करते हैं तो समझ में आता है. But directly somebody who has been there, who's being in ex-GTO and you are still being connected with the candidates and you are helping them. तो सर मेरे को लगता है अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा और उनको डायरेक्टली डाउट उनके क्लियर होंगे सर. I'll start with the screening, sir. As screening is one of the important areas and sir a huge chunk gets screened out. And यहाँ पे सर बच्चों के जो point of view है वो ये है कि there is a 3 assessors which are sitting in front of them. It's GTO and interviewing officer and the psychologist. And sir stage 2 testing के बाद तो उनका analysis समझ में आता है कि what are the areas they are looking for. During the screening process do they analyze on the same parameters, sir? Almost same, yes. Because there's always a subjectivity which involved in any kind of a testing. Like अगर हम दोनों सेम टेक्निक के बैठे होंगे तो से फॉर एग्जांपल आप भी GTO मैं भी GTO बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमेशा रहेगा वो इंडिविजुअल उसमें. बट यस देयर आर पैरामीटर व्हिच ऑलमोस्ट सेम. Sometimes you feel bad also, it's kind of injustice कि hardly within a minute तुम क्या चेक कर सकते हो बच्चे में. लेकिन the major thing when you check in stage one is like kind of confidence they have. Whether should I keep this candidate for next 5 days, 5 दिन रख के कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ उसको, या ऐसा तो है कि इस फीड में बच्चा बोल पाएगा. So it's such a basic parameters are there, not very difficult parameter or something which require lots of intense analyzing and or no. आप एक सही ठीक ठाक से स्टोरी बना पा रहे हो, आप
अपना स्टोरी को सही से नरेट कर पा रहे हो, ग्रुप में आप थोड़ा सा बोल पा रहे हो, दैट इज ऑल इट इज रिक्वायर्ड। Okay. थोड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत ही नेगेटिव आप जा रहे हो। Mhm. इनफैक्ट यहाँ दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन emphasis is not too much on oil cues, because within a minute आप इतना oil cues नहीं निकाल सकते बच्चे का officer like qualities। तो emphasis more of है कि how do he or she speaks, कितना participate, confidence, और इसको अगले 5 दिन तक रखना है कि नहीं रखना है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर एवरी, इनफैक्ट आफ्टर द स्टेज 1 is over, everyone discuss also about their own result कि why do I feel I should keep in, or why should I feel I should reject him। So Mhm. अगर नहीं भी है तो parameter before you announce the result it remains same। Okay, sir. So when it comes to SSB, everybody wants to get a recommendation. And sir, it has been an observation. It might be a myth, sir. I just want to clarify it. काफी बार candidates Navy के लिए recommend हो जाते हैं, but sir, they do not get the recommendation for Army, and sometimes it goes vice versa. So, sir, is there any particular desire or need for the organization with respect to I Army think versus it's Navy? all myths, and I'll tell you, there are Okay. candidates which get recommended for army but got rejected when they go again for the army itself। Right. Same happens in Navy also, and we find, I mean, now you're seeing so many candidates, itni baar reject हुए, suddenly recommend, or itni baar recommend हुए, suddenly reject। It's all your demonstrative performance। Right. Requirement is same, because you know the DIPR is the finally the authority who train all these assessor, be the interim officer, GTOs or psychologists। तो finally वो सेम ही चीज आप सीख रहे हो, सेम ही चीज आप इम्प्लीमेंट करते हो बिल्कुल। बाकी जगह भी, तो वैसे मेजर डिफरेंस नहीं है। बट यस, समटाइम व्हाट हैपेंस, से फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर नेवी, एंड से आपका फर्स्ट चॉइस हमेशा से नेवी रहा है, आपको उसके बारे में शायद बहुत अच्छे से पता है, या यू कैन एक्सप्लेन दोस थिंग्स इन डिटेल्स। Okay. लेकिन आप मे बी आर्मी एयरफोर्स सर्विस नॉलेज में भी लिमिटेड, और मे बी योर पार्टिसिपेशन कुड नॉट कम टू दैट स्टैंडर्ड। कई बार बच्चा ये भी सोचता है कि एक बार रिकमेंड हो गया अब तो मैं हो ही जाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार उसका होना ही है, तो उसका परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं ग्राफ डाउन हो जाता है, Right. because you don't show the same kind of interest in service, or service knowledge and awareness may lead to failure। Our parameter remains same, because and I'll tell you my own experience as a naval GTO, जितना मैंने नेवी में असेसमेंट किया है उतना ही ऑलमोस्ट मैंने आर्मी में असेसमेंट किया है। I did my training itself in army board in 17 SSB Bangalore। Okay. thereafter मैं बैंगलोर में नेवल बोर्ड में भी किया। आई वाज इन भोपाल, मैं लास्ट 10 ईयर इन भोपाल, तो भोपाल में दो आई वाज एन नेवल GTO, बट same amount of GTO you carried out in army, so my parameter cannot be changed कि अभी मैं आर्मी में जा रहा हूँ तो अलग दिखूंगा नेवी में। And Right. same and it's vice versa, naval sorry army GTOs or interim officer psychologists come and keep doing assessment here। Psychologist तो इतना common है, like all the centers, Bhopal and Bangalore are the center where Navy and Army boards are together। So Right. psychologists automatically after every 2 years they keep shifting to every board, so they don't change, their opinion, their thought process, their requirement. The requirement is almost same। Right. ये कई बार entry specific भी होता है, Sheetal, like somebody going for JAG entry for example, and he got recommended or she got recommended, maybe next time some other entry, maybe education है किसी और पे, वो reject हो जाते हैं CDS में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें उस particular सर्विस का या उस पर्टिकुलर एंट्री का अच्छा नॉलेज है, वी परफॉर्म आवर बेस्ट, नेक्स्ट टाइम वी मे नॉट, सो दीज फैक्टर में प्ले एट टाइम्स सम रोल। Right, sir. Sir, वही अब जो आगे वाले questions भी हैं sir, they are of the candidate point of view, so I will bluntly ask those questions. या Sir, it has been seen, sir, अगर कोई candidate है जो consistently सारे task में अच्छे से perform कर रहा है, but sir, it's a group performance. There are chances that in the middle of some task they have shown some aggressive behavior unknowingly, sir, and he just sustained that situation, sir. Will it impact his selection process or? See, every behavior, every मतलब your behaviors का everywhere, so finally I'm trying to find out your behavior pattern, and you find, in fact when you yourself given SSB must realize sometimes you'll find lots of fake personality within SSB itself। आप इतना अच्छा behave करने का कोशिश करते हो कि जैसे group obstacle race है and you have to climb on a wall, how of the guy just bend down there, say you climb onto my back and then just go there and try to be slightly fake। एक पीजीटी में कोई बच्चा 1 फीट से जंप कर रहा होगा, टू गाइज विल बी सडनली जंपिंग, आर यू ऑल राइट और समथिंग। सो कहीं ना कहीं एज एन असेसर योर टास्क इज टू टेक द ओरिजिनल पर्सनालिटी आउट। एग्रेशन किस तरह का है वो डिपेंड करता है, बिकॉज आप इतने कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी अगर आप एग्रेशन दिखा रहे हो तो ऑफ कोर्स इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट योर पर्सनालिटी, योर परफॉर्मेंस। क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे एज एन असेसर बीइंग जीटीओ और इंटरिंग ऑफिसर जहाँ पे 1-to-1 बिहेवियर चल रहा है पैटर्न, साइट में भी कई बार स्टोरीज के थ्रू आता है, तो आपने जो भी अपना पर्सनालिटी का एक मतलब एक पैटर्न दिखाया है तो कहीं ना कहीं हिडन है।
सो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एसएसबी के लिए आप बहुत फेक बनने का कोशिश करो, यू ट्राई टू बी somebody else. Sometimes yes, we feel very frustrated also with the behavior of other candidate. जैसे मेरे को कुछ आइडिया है, वो वर्केबल है, और काफी लोग हैं जो बिना वर्केबल आइडिया के और फटाबली लेके अंदर चले गए हैं सिर्फ इन आउटडोर टास्क लाइक पीजीटी और एचजीटी में, और किसी को करने नहीं दे हैं. बट देन इट इज एन आर्ट ऑफ हैंडलिंग सच पीपल, बिकॉज ऐसा लोग आपको डे टू डे एनवायरमेंट में भी मिलते हैं, आपको डेली लाइफ में मिलते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप, like suppose you're going to office and you find people which letting other performance also go down. So there's a way you shout on them, you show aggression towards them and spoil everything, or you discuss them very clearly कि भाई इससे ये परफॉर्मेंस हो रहा है या आपका आइडिया वर्केबल नहीं है. I think we should come up and do this. So these are the pattern one maybe better to adopt. But yes, every pattern, because finally at the end of the day मुझे तो बच्चे की वो सारी पर्सनैलिटी जाननी है. बिल्कुल. तो बट ऐसा नहीं है कि एक बार चिल्लाने से कुछ, समटाइम इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि यू वांट टू tell other people also कि we should do this or should not do this. So it is not too aggressive in a manner that it is disruptive. मतलब we'll let it go. And of course the candidate, moreover the ND candidate 17-18 years, I think it's a normal day to day life. So भी कई बार छूट जाता है. Right, sir. Sir, coming to GD, group discussion, and sir, जब GTO के अंदर GD होता है तो सर पहली चॉइस ग्रुप की होती है. एंड सर यहाँ पे चॉइस मिलता है कि whether you want any topic associated to maybe national, international or the social cause. So it's a choice of the group. And second choice is given by the GTO. So sir, since first choice is given to us, so does it really impact what kind of topic we are choosing, or it is important to have a healthy discussion during the GD? I think it's always important to have healthy discussions because finally it is not just an individual choice, it's a group choice. But yes, GTO just make it a point initially when people picking up what kind of a topic you want to go ahead. However, it doesn't make much of the difference because finally आपका performance उस पे judge होगा जो भी topic का आप discuss कर रहे हो and how you are discussing. Right. So it's all about how you lead the group, how you have it, and we keep saying in GD, it is not just what have you spoken, it is also matter that how you have spoken those points. वो सारा जो आपका behavior manifestation which comes out, based on this the candidate is being judged. Okay, all right, sir. And sir, group के अंदर जब हम GD के अंदर participate करते हैं सर, we have given certain pointers. So sir, अगर हम अपने opinion time के साथ change करते हैं तो वो भी एक issue होता है सर, या we should stick to the point which we have chosen initially? No, एक्चुअली ये बहुत कंफ्यूजन रहता है. इनफैक्ट राइट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को कई बार लगता है कि सर क्या मैं एक ही लीड पे लगा रहा हूँ या कैन आई स्पीक ऑन अदर टू लीड्स एज वेल. एंड व्हेन यू फाइंड इन जीडी, स्पेशली जीडी जो भी तीनों लीड मिलती है वो कहीं ना कहीं उसका रीजन है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक, सोशल टॉपिक देता हूँ कि सोशल मीडिया का बिगेस्ट इम्पैक्ट क्या है. आई सेड कैंडिडेट लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम sometime, and then secondly I'm giving you key you get more aware about what is going on around the world and it provides you more opportunity. And say for example third lead I say that more focus on kind of a personal attention, see how many likes and comments I'm getting, to keep checking it out. So ऐसा नहीं कि एक ही सही है, दो प्योरली गलत है. लेकिन जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं वी हैव टू डू कंपैरेटिव एनालिसिस. फॉर एग्जांपल आप एक घर में कार भी खरीदते हो तो आप यू सेलेक्ट सपोज 3 मॉडल्स, so you compare all these 3 and then you come to one conclusion. You just cannot directly say this car is best, it's my quality. Maybe somebody is also trying to give you other feedback ki why if I've compared to another car इसमें ये qualities है. However, comparative to this आई फाइंड अभी रिक्वायरमेंट ये है, चाहे वो बजट के बेसिस पे हो, कलर रिक्वायरमेंट पे हो, या आपका सीटिंग कैपेसिटी हो, रेंजेस हो, और उसका माइलेज हो. सो आई थिंक कैंडिडेट शुड बी ओपन, डिस्कस ऑन ऑल द टॉपिक्स, आई मीन ऑल द लीड्स व्हिच इज गिवन, एंड देन come out to its consensus. Do not just stick to only one lead. You can speak. In fact, GD का briefing भी बोलता है कि you can speak what you like, when you like, and as many times as you like. Okay. हाँ, the problematic behavior is like when you change your lead every single line. मतलब you are contradicting your own statement when you speak. So, for example, I say no, it is because of social media. Everyone is wasting their time. And next line you're saying no, it is you get so many benefited and you don't need to waste your time. So खुद का contradict नहीं करना है. However, you can bring it in such a way. So, for example, I understand it lead to wastage of time, but it's all. But you are not totally disagreeing. But it's already also depends on individual. How you behave it, and finally, if you find, you will also get lots of good points from it.
सो इट्स अ मिक्स एंड मैच, हाउ डू टेक इट अप। Right. एंड आई थिंक उसके लिए आपको अलग लीड्स पे बोलना ही पड़ेगा टू सम एक्सटेंट टू, आई मीन, पुट योर पॉइंट क्लियरली अक्रॉस। Absolutely. Right, sir. Sir, पर्सनल इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में मुझे बॉडी लैंग्वेज का, सर, आई नो द पर्सपेक्टिव किस तरह से चीजें ऑब्जर्व होती हैं, बट सर जीटीओ इज बीइंग ऑलवेज सीन पुटिंग द गॉगल्स एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडिंग फार अवे। सर, वो किस तरह से चीजों को नोटिस करते हैं, सर, एंड व्हाट आर द एरियाज ही रियली लुक फॉरवर्ड व्हेन दे आर असेसिंग द कैंडिडेट्स? तो क्या होता है कि जब व्हेन यू विल कंपेयर बोथ आल्सो, फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू का वन टू वन इंटरेक्शन, बिल्कुल। so interviewing officer is also looking at all the time towards you. But because of this behavior, you also get sometime, slightly controlled manner, और आप जिस हिसाब से भी आप बिहेव करते हो, तो बहुत ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर आता है, क्योंकि आपको पता है आप कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वर ऑब्जर्व बाय द असेसर who is only looking at you, talking to you. When we comes to GTO, आप कितना भी करो, like GTO put the goggles, of course, I mean, one is we keep saying, style and all, but it's all of us, you can assess and see every candidate's behavior pattern. लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इनफॉर्मेलिटी जरूर है, क्योंकि जीटीओ इज नॉट डायरेक्टली टॉकिंग टू यू, इट इज सिटिंग ऑन वन कॉर्नर और आप आपस में बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू ऑन फ्रेंड्स, तो आपका एक जो बिहेवियर पैटर्न है थोड़ा सा अलग निकल के आता है। जीटीओ ऑल्सो लुक एट द बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि सम टाइम लाइक यू वेरी राइटली आस्क्ड इनिशियली क्वेश्चन की एग्रेसिव बिहेवियर, वो तभी आएगा जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो, सम टाइम here is a pattern that people are not letting others do any work. Sometimes you're very mild, could not have good points, but you're not able to put across. So all these things being observed by GTO की, इनफैक्ट वो देखता भी है कि अगर इसको मौका मिलता है तो कैसे बाहर आते हैं, अगर नहीं, कई बार ये भी हो रहा है कि इसको किसी कारण से मौका नहीं मिल रहा है, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट जीटीओ देयर आर 9 टास्क, इनिशियल बेसिक सीरीज एंड देन कंफर्मेटरी सीरीज। तो बेसिक सीरीज में कई बार होता है कि बच्चे को मौका नहीं मिल रहा है, या जीडी में थोड़ा किया, फिर कहीं ना कहीं आ गया, पीजीटी में कर रहा है, तो बाकी लोगों के कारण वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ आइडिया दिए सही दिए। सो एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड डाउन, एंड समटाइम इट्स ओनली बाय बॉडी लैंग्वेज यू कैन कम टू नो कि हाउ माइल्ड एंड कॉन्फिडेंट यू आर, और आर देन यू आर एग्रेसिव एंड कॉन्फिडेंट। कई बार तो बच्चा वो जो लाइन भी ड्रॉ नहीं कर पाता है कि दिस एग्रेशन और दिस कॉन्फिडेंस, एंड तो फिर वो उसमें आगे इनफैक्ट उस बिहेवियर के बेसिस पे ही जीटीओ आगे वो डिवीजन करेगा एचजीटी में या कमांड टास्क में किस तरह का टास्क, तो ऑफ कोर्स इट इज बीइंग सीन, इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। All right, sir. So getting variety of point of views, because sir अभी तक चीजों को हम बहुत अलग तरीके से एनालाइज कर रहे थे, because these are the candidate point of view or the personal experiences, and getting your point of view is something I feel a lot of crowd is going to get help. And so before I move further, I recently got a book from Oswaal books, sir, this one, and here your name is written. Sir, whenever I get any book, so I definitely go through it completely. But sir, one thing that has really surprised me that you are being GTO, and the most interesting part of the book is the personal interview. So, sir, what is the concept behind and what is the ideology behind writing this book, sir? Can you please tell? Yes, sir. Actually, there are a number of candidates. See, एक तो बड़ा एक misconception और myths है कि whether we have to go for coaching or not, is coaching harming someone or coaching beneficial someone. So it's all about, we have to understand SSB is all about our personality game. It is not, it doesn't depend, which coaching center you are going. It doesn't depend which, what kind of preparation you do. Finally, आपका खुद का personality है जो वहाँ पर check होगा. No one is going to pass you fail because you have been taught by Commander Vikas Yadav or somebody else. इट मेक नो डिफरेंस, एंड मैं तो बोलता भी हूँ कि कैंडिडेट की सक्सेस में 85% जो है रोल है वो कैंडिडेट का या उसका जो प्रीवियस उसके पेरेंट्स का, उसकी अपब्रिंगिंग का, इन सब का बहुत रोल होता है। एनी वी कीप टेकिंग क्रेडिट फॉर सो मेनी सक्सेस एंड ऑल, बट फैक्ट इज दैट आवर रोल इज हार्डली 10 to 15%, and it's all maximum you can do in 21 days, like when we also teach a candidate. So, but कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि कैन वी गो रो, नो वी कैन नॉट। आज की डेट में से फॉर एग्जांपल आप किसी भी एग्जाम का लो, चाहे सिविल सर्विसेज का है, यूपीएससी का है, आप नॉर्मल एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए भी जा रहे हो प्राइवेट कंपनी में, कैन यू गो विदाउट रीडिंग अबाउट दैट इंटरव्यू, कैन यू गो विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंपनी? इट इज, दैट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग, आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, एकदम जैसे हो ऐसा बताना चाहते हो, नो। इट आल्सो शोज योर कैजुअल अप्रोच, योर एटीट्यूड की आपको कोई सीरियसनेस है ही नहीं। मुझे अगर मैं, जैसे हमने पहले गाड़ी का भी बात किया था, घर में कार लेने के लिए, बाइक लेने के लिए इतना डिस्कशन होता है, ये तो आपके करियर का सवाल है। इट रिक्वायर इंटेंस डिस्कशन, चाहे वो इंटरनल खुद से ही डिस्कशन क्यों ना हो। एंड वन थिंग रिक्वायर्ड कि आपको नॉलेज कितना है आर्म फोर्सेस का, वो इंटरव्यू किस पैटर्न पे होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले।
बिल्कुल। सो वन बेसिक मोटो टू राइट दिस बुक की यार बच्चा इधर उधर आज की डेट में इतना ज्यादा कंटेंट, इतना ज्यादा डेटा है, लाइक लॉन्ग बैक व्हेन वी आई वेंट फॉर इंटरव्यू, तब तो इतना इंटरनेट पे था भी नहीं, एसएसबी वाज मोर ऑफ ए मिस्ट्री। यस सर। अभी मिस्ट्री के साथ साथ इतना कुछ आ गया, लाइक समटाइम वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर, से फॉर एग्जांपल मैं पीपीटी एग्जांपल देता हूँ, and I was very surprised when I came and started and see this how candidates are preparing, and you find such a picture which can never be shown into the SSP. वो बहुत ही एक I mean I will not say एक there's a picture which is shown some kind of very illegal doing something or a molestation or kind of a rape kind of a scenario show, and you try to teach candidate how to write a better story. No, this is not something which is being checked in SSP. So एक Right. तो is wrong feedback and wrong data से बचे. So I thought I think try to create something, and you have something right now so fresh. And when I tried all this thing, in fact, when I tell you how inspiration came for writing a book. When I came here, got retired as a GTO, and I'm very thankful. I mean, it's always opportunity. मुझे I retired from Bhopal, but उससे पहले मौका मिला कोलकाता में सर्व करने का, and where I was commissioning senior GTO. When I say commissioning, मतलब I was the first. एंड वो सीनियर जीटीओ जब वो स्टेब्लिश हो तो आपको बहुत मौका मिला है चीजों को समझने का, डिटेल में प्लान करने का, एग्जीक्यूट करने का. सो Yes. बहुत ही इंटरनल अंडरस्टैंडिंग समझ में आया. सो व्हेन गॉट रिटायर्ड आई इम्प्लीमेंटेड ऑल दिस आइडिया ऑफ माय फर्स्ट बैच. पहले बैच में इनफैक्ट पीपल आस्क कि सर आप तो जीटीओ एंड हाउ डू यू राइट इट अबाउट द साइकोलॉजी एंड ऑल द इंटरव्यू. जब पहली बार इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो of course, one is budgetary constraint. You can't afford all the assessors. Assessors also comes at a cost. So I Right. start teaching everything. I give classes on GTO. Of course, GTO तो मेरा मतलब forte है. Interview, you see so many interviews. There's a cross technique facility which you just avail. वहाँ पे आप बैठते हो interview room में. You see other interviews also, and you finally carry out this discussion in conference every time. And this experience doesn't come with a one or two interview, it comes with a thousand of candidates when you assess. If I actually calculate even stage one, maybe, approx 12,000 of candidates. So एक वो experience था, तो I thought कि let apply this on to the candidates. तो हमने पहला batch चलाया ना, and I taught everything, and when the result came, and it was a test for us also. So I still remember the name of that candidate, Ayush, and it was I think 149 or 150, exactly. I don't remember the NDA. Okay. Overall, the highest marks amongst boys was of this boy, is my student. Second highest again was my student. He came for a camp for 5 days. So जब वो back to back इतना result आया, मतलब it's not कि मैं उस चीज को glamorize कर रहा हूँ या उसको, but क्योंकि वो simple वो चीज apply किया कि बच्चों पे try करते हैं whatever I learned, and result was phenomenal. And thereafter, there was no looking back. उसके बाद बढ़ते चले गए. So then I thought कि why not compile this, whatever data we are having, and give it to those candidates who cannot afford. क्योंकि हर बच्चा देखो इतना कुछ तो बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के वन रीजन में, कुछ साउथ में है, कुछ रूरल बैकग्राउंड में. एवरीवन कैनॉट अफोर्ड दिस कोचिंग्स. एवरीवन कैनॉट अफोर्ड टू गो टू सम सिटीज, गो फॉर से 15 days हो, 21 days हो, तो फिर भी एक बहुत ही रीजनेबल चल रहा है. बट इट रिक्वायर मनी. नंबर ऑफ फैमिलीज कांट इवन अफोर्ड 10,000 अ मंथ. सो अब उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना तैयारी करने का ऐसा जिसपे वो रिलाई कर सके. So I just combined all this thing, and interview पे तो literally I worked so hard. It took me almost 1.5 months to write a mock interview. कितनी बार होता था, we used to write the entire day, काम किया उसमें, लिखा और एक पेज निकल के आया finally at the end of the day, and next day से no मजा नहीं आया. So delete this page and rewrite it again. So I hope, and you like the books, you like the content, and surely benefit those guys, because I don't want to put something which is not relevant and which is unnecessary. आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होना भी कई बार बहुत नुकसानदायक हो जाता है कि आपके पास इतना कुछ, अभी आप क्या पढ़ो क्या करो. सो वो कंसाइज करके छोटा बुक, एंड एन आइडिया ऑफ सुमित कि सर बुक ना इतना प्रिसाइज बनाओ, आप इतना छोटा बनाओ कि वो ना हैंडी हो जाए. एंड ऑल Absolutely. he also helped me writing all these topics which are being asked in lecture में या GD में. बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें he also carried out work. वैसे कि यार क्वालिटी काम होना चाहिए, देखो बाकी चीज बाद में है. तो I think that way, and now we are getting very good response from candidate as well. Right, sir. It's a holistically compiled book. And जो मैंने ऑब्जर्व किया सर, आई थिंक इट इज सफिशिएंट इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग एट देयर ओन, क्योंकि सर बहुत सारी बुक्स है तो डाइवर्जन बहुत ज्यादा हो जाता है कैंडिडेट्स का.
तो वो भी एक इशू कैंडिडेट फेस करते हैं. सर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस व्हिच आई वाज अबाउट टू आस्क सर. सर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कैंडिडेट एंड ही इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड इन कमांड टास्क. काफी सारे कैंडिडेट्स ने उसे बुलाया है. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 10 on 10 ऑब्स्टिकल्स को उसने कवर किया है. एंड सर, अगर कैंडिडेट जो उसकी ग्रुप कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर, अकॉर्डिंग टू देम ही इज अ रिकमेंडेड काइंड ऑफ कैंडिडेट. But sir, unfortunately, if he did not get the recommendation, what are the possibilities where he would have lacked and GT ने उसको reject किया होगा सर? क्योंकि यहाँ पे दो, there are two factors. One is candidate may not get recommended because there are three techniques. We don't know which technique is failed in completely. And second thing is हम एज ए कैंडिडेट परस्पेक्टिव एक बहुत वो रहता है, लाइक बच्चे वहां बोलते भी हैं, मुझे तो अपना एसएसबी याद आता है, भाई तेरा पक्का हो जाएगा, तेरा तेरा मतलब बॉर्डर लाइन टाइप लग रहा है, यू कुड हैव डन दिस एंड ऑल. एंड समटाइम्स दोस हु गिविंग फीडबैक कुड नॉट मेक इट अप. कैंडिडेट अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को सारे लोगों ने बुला लिया तो मे बी, बट एट टाइम्स यू फाइंड सारे लोगों ने बुला लिया, उसका नहीं हुआ, और जिसको शायद एक या दो बंदों ने बुलाया वो रिकमेंड हो गया. सी इट्स अ क्वालिटी एंड नॉट जस्ट क्वांटिटी. Yes, to some extent, your dynamics with sociometry also plays some or other role here. कि आपको कितने लोगों से आप अच्छे से connected हो गए, कितने आप पे believe करते हो. But कई बार एक बच्चा ऐसा बेवकूफ काटता है सबका कि everyone into this, and we also came to know कि अरे how he is leading, or maybe he is group in this social dynamics, वो अच्छे से उसका collaboration है, लोग उसको accept कर रहे हैं as a team member. But his content is not up to the standard which is required. When he speak on a topic, it is not relevant. Sometimes you find that candidate they keep comparing कि मैं तो 5 बार बोला, 6 बार बोला, इतनी देर तक बोला. But are this the point which you have given for the relevant to the discussion point which I mean to the GD which was given, or were you able to understand the topic, or maybe the level of idea which you are generating is very generic, repetitive, or it is bringing some new line of idea. Right. तो कैंडिडेट जब वो आपस में शायद वो असेस करना भूल जाते. दूसरा समटाइम the candidates are very good and may be cleared by GTO but may not be cleared by psych और इंटरव्यू, बिकॉज आप एज ए ग्रुप में सिर्फ आपने उसका जीटीओ परफॉर्मेंस देखा, आपने बाकी परफॉर्मेंस नहीं देखा. और काफी बच्चों के मिथ भी होता है, इनफैक्ट फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म अगर टू ब्रिंग इट आउट, इज जीटीओ वेरी इंपॉर्टेंट और साइक वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन देयर इज नो नथिंग इज इंपॉर्टेंट और वर्स्ट. Every assessor has equal weightage there. Every assessor has the equal say and a full authority to stop or pass a candidate. So ऐसा मतलब स्टेज वन में तो कई बार होता है कि अगर आप एक ने भी पास किया तो इफ यू आर वायर 1 2 3 जनरली लाइकली टू क्लियर स्टेज 1. बस स्टेज 2 में उल्टा है, आपको हो सकता है कि किसी ने फेल किया है बट आफ्टर कॉन्फ्रेंस दे आर रेडी टू कम अप विद योर सीइंग अदर परफॉर्मेंस. कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं पास कर रहा. सो मे बी उस कैंडिडेट का जीटीओ का परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो, लेकिन उसने साइक में क्या स्टोरी लिखा है, इंटरव्यू में जब 1-to-1 आप डिस्कशन करने बैठे क्या चीज बाहर निकल के आया. सो ये फैक्टर भी हो सकता है. तो बोथ द फैक्टर एक्चुअली प्ले quite crucial role. I mean, your performance in other tasks. And second thing is you are not able to understand, but your quality is not to the standard. Only you are playing with the quantity कि ज्यादा लोगों ने बुलाया, ज्यादा देर तक बोले. बिल्कुल right. Sir, as you said just a few questions back that हर कोई coaching afford नहीं कर सकता है, and there are candidates who are preparing at their own. And but sir, GTO is something where you need proper ground and everything. So how somebody can prepare GTO at home? In fact, very right thing. GTO require practical experience. तो आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, पर आप दोस्त अफोर्ड कर सकते हो. लाइक घर पे बैठ कर, चाहे लाइक माइंडेड, चाहे वो आपकी फैमिली में है, चाहे आपके वो दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, या ना भी करें. तो एटलीस्ट वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीटीओ यू शुड हैव एटलीस्ट 3 or 4 फ्रेंड्स. कम से कम 2 तो होने चाहिए. सो फर्स्ट थिंग, वन शुड रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम टास्क वाइज चलते हैं, जैसे जीटीओ की बात करें, जीडी की बात करें, जीडी में कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत शॉर्टकट ट्राई करते हैं. लेकिन हम रिटर्न में तैयारी करते हैं कि भी वॉच सम वीडियो, बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको मिलता है, यूट्यूब पे आपने देखा और आपको लगता है आपको टॉपिक क्लियर हो गया. आई ऑलवेज प्रेफर कि यू हैव टू अवॉइड वॉचिंग द वीडियोस, बिकॉज आपको इतना ज्यादा प्रीपेड कंटेंट और डेटा मिलता है उसमें, आपका खुद का दिमाग काम नहीं करता. बिकॉज एज ए जीडी आई एम नॉट ओनली आस्किंग कि आपसे कुछ फैक्ट एंड फिगर चाहिए, मुझे चाहिए लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग की व्हाई डू यू थिंक इट इम्पैक्ट सो मच, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट. से फॉर एग्जांपल अभी इजराइल और हमास का वॉर को लेके चलो, या रशिया यूक्रेन चल रहे थे इनसे, और इंटरनेशनल नंबर ऑफ इश्यूज. व्हाई डू थिंक इट कैन इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट. से फॉर एग्जांपल हाउ टू काउंटर चाइना, मिलिट्री है या आपको लगता है ट्रेड में है. सो यू आर नॉट जस्ट गिविंग समवन, क्योंकि सारा बच्चा वही यूट्यूब वीडियो देख के आ रहा है, सारा कुछ वही बोलने वाला है. फिर बच्चा कुछ एक नए प्रॉब्लम के साथ आता है कि सर बहुत फिश मार्केट हो गया, लोग सुन नहीं रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला.
लोग आपको तब सुनेंगे जब आप लॉजिकल हैं, जब आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं उन्होंने नहीं सुना होगा, या उनको कुछ नया लगे और अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहे हो। वो Yes. तब आएगा जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। बिना पढ़े नहीं हो सकता, मतलब शॉर्टकट के थ्रू तो हो नहीं सकता। तो वन इज दे शुड रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस एंड क्रिएट दोस डिस्कशन। I'm not saying कि all YouTube videos are bad, so you know they're good, but you're not getting to see your own point of view. आपको जो दिखाया गया है, like जैसे आप कोई मूवी भी देखते हो which is based on some book, अगर आपने पहले बुक पढ़ा होगा तो आपको मूवी में मजा नहीं आता, बिकॉज आपका इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं चलता। Right, So sir. यहाँ पे आपका इमेजिनेटिव Mhm. क्रिएटिविटी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ता है। Mhm. And यही आपका लेक्चर में है। Now when we come to outdoor task, yes, and then we made certain videos and already you read this book also, उसमें कुछ QR कोड्स भी दिए। The moment you scan it, at least आपको ये पता लग जाएगा किस तरह का स्ट्रक्चर आता है। Right, right. Once you see the structure and you get the idea, आप घर में बैठे हुए like right now if I can see your background, ये बैड रखा हुआ है, या फिर इसको आप एक कमांड टास्क बना सकते हो, एक चेयर को आप कमांड टास्क बना सकते हो, एक टेबल को आप नंबर ऑफ आइडिया कैन जनरेट, नंबर ऑफ डिफिकल्टी लेवल। आपको पता है एक प्लैंक चाहिए, आपको बड़ा नहीं, आपने छोटा प्लैंक ले लिया, एक बल्ली ले ली छोटी सी, एक डंडे से बना लो आप छोटा सा, एक रस्सी ले लिया। अब आप घर में किसी भी स्ट्रक्चर को सोच सकते हो कि मुझे इधर से उधर जाना है, इफ दिस इज कम्प्लीटली वाइट नाउ आई पुट दिस ब्लू, सो वो आइडिया आप जनरेट कर सकते हैं। बट यस, यू शुड ट्राई टू डू दिस विद फ्रेंड्स, बिकॉज चैलेंज ये नहीं है कि आपको आइडिया आ रहे हैं नहीं आ रहे। वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि जब आप उस आइडिया को अप्लाई कर रहे हो तो वो आइडिया लग कैसे रहा है, मतलब उस आइडिया में किस तरह से आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो, किस तरह से आप लोगों को अपनी बात बता रहे हो, लोग आपका सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, एंड हाउ डू फाइनली इट इज वेदर ग्रुप एग्री विद योर आइडिया, देन ओनली द आइडिया विल आल्सो बी एप्लीकेबल। Right, और sir. कई बार देखा होगा कि अच्छा आइडिया है, आप बता भी रहे हो, कोई सुन नहीं रहे। हाँ, हाँ. वो सारी टेक्निक के लिए ग्रुप चाहिए, बाकी तो आई थिंक सिटिंग इन वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर हाउस यू कैन मेक इट। Okay, sir. Sir, as you said, there are chances कि आप बोल रहे हो पर ग्रुप नहीं सुन रहे हैं. So there is a probability that you are a good candidate, but your group is not supportive or it's not aligning with you. And sir, in such situation, it could also impact your performance, whether in screening, whether in the whole process of SSP, sir. How to sustain this situation, sir, because it is going to impact our performance. Yes, and it is more of I think logical, which I said earlier. So logic is the thing which is people going to listen. Say जब आपका ग्रुप नहीं सुन रहा, आप कुछ लॉजिकल बताना चाह रहे हो, एक चीज याद रखना, जो असेसर बैठा है उसको इसलिए पैसा मिल रहा है कि वो आपको ऑब्जर्व कर सके। सो इस मेन रोल इसकी कोई बच्चा ना छूट जाए मुझसे, ऐसा जो मतलब इवन स्टेज वन में भी आप ये सोचते हो कि यार कोई बच्चा जो अच्छा बच्चा है वो छूट ना जाए, because finally at the end of 5 days you are going to conference and you feel very proud when you take some candidate which is recommended। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, बहुत बार होता है, लेकिन मेरे साथ तो काफी बार हुआ। you go going to the conference और एक भी zero recommendation, now you feel so bad about it, it is nothing to be proud कि मैं किसी को पास नहीं कर पाया। you sit with your neck down कि क्या ही बोलना है, and fine। and as an assessor you feel so proud when you take some candidate, दो तीन तो मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या बात। and then so remember कि the assessor is listening but he's interested in the logic। and even candidate will only, you can only sustain those situation when there's a chaos, when you bring out those logic। and when you observe some of the group discussion you find that suddenly एक बच्चे को सभी लोग सुनने लगते हैं उस भीड़ में, और बाकी लोगों पे फिर chaos चलता है। अगेन फिर कोई बच्चा बोलता है तो काफी लोग उसको सुनते हैं, रीजन भी either he or she are trying to apply some logic or giving something, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपीडीटी है, अब आपको कोई स्टोरी नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा है, तो मे बी यू कैन ब्रिंग आउट कि यार देखो, जैसे हमने पिक्चर में देखा, पीपल आर इन फॉर्मल्स एंड दे आर वेयरिंग ए टाई, सीम्स लाइक इन स्कूल यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाई वी मेक ए स्टोरी। सो मे बी एक अटेंशन आपको मिलता है। व्हेन यू ट्राई टू बी टोटली इररिलेवेंट, पुशिंग ओनली ऑन योर स्टोरी और स्पीकिंग ओनली ऑन दोस जनरल टॉपिक, दिस इज बेटर देन वर्स्ट और ये हुआ ऐसा हुआ, सो फिर पीपल मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फाइनली आपको ये भी समझना है कि अगर वहां उस ग्रुप में 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग अपने आप रिकमेंड होने हैं। They didn't come there so that they can make you recommended। सिचुएशन को आप अगर एक बार हैंडल करके लॉजिक लगा के मे बी यू गेट मोर पॉइंट। जितना नुकसान है ऐसे क्यों, उसमें उतना फायदा भी होता है। इफ यू आर एबल टू कन्विंस सच ए ग्रुप व्हिच इज यू फाइंड डिफिकल्टी, या आप उस जगह अपना पॉइंट जहाँ पे लोग सुनते हैं, यू गेट एट एडवांटेज आल्सो कि बच्चे ने ऐसे ग्रुप को हैंडल किया, लेट मी गिव मोर मार्क्स। Absolutely, sir. Right, sir. So I'm done with the questions, and I really, literally, sir, I admit to the fact कि I got variety of sir different point of view हर एक scenario के अंदर मुझे मिला है, and I want more videos with you in future, sir, because such video really help a lot of candidates. Maybe just a one-on-one conversation between you and I
but it has literally a lot of deep impact on the aspirant who are preparing in the remote areas, sir, as far as I see the comments. Thank you so much for joining, sir. And Thank you, Shita. In fact, I must say, I like this conversation because I have done other podcasts as well, but it's very good. Reason being, you're so professional, you are to the point, what is required. Do not going on dragging the questions like, but sometimes you go into different podcasts and you get to hear the questions कि आपको कैसा लगा होगा, आपने feel किया होगा किसी को, या आपको मतलब, there's a very irrelevant question, make no sense at all, and people try to, push on to those things. So I mean, really, it's off to you. You bring that professional into the podcast and how do other podcasts as well. I mean, to the point, you always discuss which is required, is relevant for the candidate. I mean, keep it up, and I just enjoy it. Thank you so much, sir. Jai Hind, sir. Thank you, Jen. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.